Hi everyone, welcome to Vision Institute and I welcome you all to our YouTube channel. Welcome to Daily Dose of Vocabulary based on the Hindu editorials, and like every day I'm again here with top 10 vocabulary words based on the Hindu editorials. So let's see what is our motivational line for today. So for today our motivational line is do not focus on what you cannot do. Take a look at what you are capable of. You will feel confident and learn new things along your way. So let us first understand what is the meaning of this motivational line. Do not focus on what you cannot do. So we must always not focus what we cannot do. I mean, we generally tend to focus on, oh, he's doing that, oh, she's doing that, I cannot do it, I am not capable of doing that. So leave it. If leave what you cannot do, take a look at what you are capable of. I mean, what you can do, you should focus on that. You should find out what is your strength, right? That is when we are going to shine. And then when you find out what you can do confidently, you will feel more confident and you will learn more things along your way, right? So do not focus. Stop focusing, stop watching others, stop looking at others, stop saying this that oh, she can do this, he can do this, he's doing that, she's doing that. Stop saying that. Just focus on what you can do. Maybe what she is doing, you are not confident on that work. Or maybe what I am doing or what you are doing, maybe I am not confident doing that work. Or maybe what I am doing, you are not confident on that work. So focus on what you are confident in and do that and shine. So, with this motivational line, let us start our today's session. Let us see what is our first vocabulary word for today. For today, our first vocabulary word is Byzantine. Byzantine is an adjective which means in Hindi pechida, right? In English, you can say it's complex, hard to comprehend, right? These can be the English terms. It is very complicated or it's complex, right? We can say in Hindi, बहुत पेचीदा मामला है. We say this, right? So that is when we refer to Byzantine matters. Synonyms can be daedal, complicated, convoluted, devious. Antonyms can be plain, simplified, uncomplicated. These can be the antonyms. Now, how to use it in a sentence? Using the Byzantine instructions, it was hard for me to make the cake. Or you can say to bake the cake, right? You can also say to bake the cake. So, I got some instructions. Maybe it was written in a book, or maybe I found out in Google, right? I googled it and I found out the instructions. But those were Byzantine instructions. That means it means it was very complicated to understand, right? It was not at all written in simple words, right? It was not simplified. So that is when it is very difficult for me to understand the Byzantine instructions, and it was impossible for me to bake the cake with those instructions. Let us see our next vocabulary word for today. Our next vocabulary word for today is German. German is an adjective which means in Hindi sarthak. Or in English you can say relevant to a subject under consideration. That is German. राइट और रेलिवेंट टू अ सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन. तो अंडर कंसिडरेशन अगर कोई सब्जेक्ट हो तो उस सब्जेक्ट के रेलिवेंट मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा जो दैट इज जर्मन. और यू कैन से रेलिवेंट. सो वी जनरली से कि टॉपिक से रेलिवेंट बात करो, मतलब टॉपिक के ऊपर बात करो, डोंट डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक, राइट? दैट इज व्हाट जर्मन मीन्स. Synonyms can be pertinent, applicable, apposite, or antonyms can be irrelevant. How to use it in a sentence? Since we were running out of time, our professor asked us to limit our questions to those German to today's lecture. तो हम लोगों के पास टाइम बहुत कम था. वी वर रनिंग आउट ऑफ टाइम. दैट मीन्स वी हैड वेरी लेस टाइम.
So what our professor did, our professor asked us to limit our questions. Our professor asked us कि आज के टॉपिक के, आज के लेक्चर के ऊपर डिपेंड करके जो जो क्वेश्चंस है आप लोग मुझसे वो पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इधर उधर के क्वेश्चंस करोगे तो आज के लेक्चर के ऊपर क्वेश्चंस ही मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा. दैट इज व्हाट जर्मन टू टुडेज लेक्चर मीन्स, राइट. Our next vocabulary word for today is vest. Vest is a very commonly used word. इस वेस्ट का मतलब वो नहीं होता है जो कपड़ों के अंदर पहना जाता है, जो लड़के या लड़कियां कपड़ों के अंदर पहनते हैं. दैट इज नॉट वेस्ट. दोज आर वेस्ट क्लोथ्स, वेस्ट वेयर, राइट. दिस वेस्ट मीन्स इट इज अ वर्ब जिसका मीनिंग होता है हवाले करना. Or in English, you can say confer or bestow. That means power or authority or property on somebody. That means you are giving the power to someone else, right? That is conferring or bestowing the power. That is called you are vesting the power to someone else. आपके पास power है, आप किसी और के हाथ पे वो दे रहे हो power. That is called you are conferring the power or you are vesting the power to someone else. Right. Synonyms can be endo, lodge, lay, place. Antonyms can be refuse, take, dislodge. ये सारे opposite words हो सकते हैं. इस सेंटेंस में कैसे यूज करें? पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर ऑफ मेकिंग लॉज. तो पार्लियामेंट को इस पावर दिया, ये पावर दिया गया है कि पार्लियामेंट सिर्फ लॉज बनाएगा, राइट. सो पार्लियामेंट हैज गॉट दिस पावर टू मेक लॉज. ऑल राइट. So what is our first idiomatic expression for today? Our first idiomatic expression for today is corridors of power. What is the meaning of corridors of power? It means the higher levels of government officials where important decisions are made. So government officials where important decisions, important urgent decisions are made, that is called corridors of power. Now let us see how to use it in a sentence. The new policies and procedures regarding public employment opportunities are in the corridors of power at the present time. तो कहाँ पे है ये जो नए पॉलिसीज़ है, नए प्रोसीड्योर्स है, किसके ऊपर ये नए प्रोसीड्योर्स, किसके प्रोसीड्योर्स? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ये जो नए पॉलिसीज़ है ये इस वक्त कॉरिडोर्स ऑफ पावर में मौजूद है. मतलब इस वक्त ये हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डिसाइड कर रहे हैं. दैट इज वेयर इट इज प्रेजेंट. All right, our next vocabulary word is stymie. So what is the meaning of stymie? Stymie is a verb जिसका meaning होता है गतिरोध, right? Or in English you can say prevent or hinder the progress of, to stand as an obstacle. So if you are standing as an obstacle, मतलब किसी चीज को आप रोक रहे हो, that is what is called stymie. Synonyms can be hamper, hinder, obstruct, inhibit. Antonyms can be assist, help. These can be the opposite words. Now, how to use it in a sentence? Since my parents were unhappy about my college choice, they tried to stymie my decision by withholding their financial assistance. तो मेरे पेरेंट्स मेरे चॉइस ऑफ कॉलेज, मैंने जो कॉलेज चुना है उससे खुश नहीं थे, तो इसीलिए दे ट्राई टू स्टाइमी माई डिसीजन. हमारे मेरे डिसीजन को ये लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे, मेरे डिसीजन के ऊपर ऑब्स्टैकल बनने की कोशिश कर रहे थे, मतलब बीच में आने की कोशिश कर रहे थे मेरे डिसीजन के. और इसलिए उन्होंने, इसके लिए उन्होंने क्या किया ये मुझे बताने के लिए या मुझे जचाने के लिए क्या किया, विथ होल्डिंग देयर फिनेंशियल असिस्टेंस. तो वो हमें, मुझे जो फिनेंशियल असिस्टेंस देते थे, पॉकेट मनी देते थे, वो उन्होंने रोक लिया, राइट. दैट इज कॉल्ड स्टाइमी. Our next vocabulary word is reinvigorate. Reinvigorate ये एक verb है जिसका meaning होता है पुनर्जीवित, और you can say give new energy or strength, or you can say to refresh. That is also called reinvigorate. Synonyms can be enliven, rejuvenate, renew, revitalize. Antonyms can be destroy, ruin. ये सारे इसके antonyms हो सकते हैं. सेंटेंस में कैसे यूज करें? अ फ्री लंच वॉज हेल्ड फॉर स्टाफ टू रीइन्वोगोरेट मॉरल एंड रिफ्रेश कंपनी यूनिटी. तो एक फ्री लंच ऑर्गेनाइज किया गया, क्यों? मॉरल को रीइन्विगोरेट करना था, मतलब पुनर्जीवित करना था. मॉरल को मतलब अपने अंदर की मॉरल पावर, मतलब मनुष्यत्व बोध को पुनर्जीवित करना था. एंड टू रिफ्रेश कंपनी यूनिटी, कंपनी का जो यूनिटी है, मतलब एक साथ काम करता है, इसको रिफ्रेश करने के लिए एक लंच का और लंच ऑर्गेनाइज किया गया था. Our next vocabulary word is unleashing, or you can say unleash also, unleash or unleashing.
इट इज़ अ वर्ब जिसका मीनिंग होता है उन्मुक्त करना इन हिंदी. और यू कैन से अनलीश रिलीज अ डॉग फ्रॉम अ लीश, ये भी हो सकता है दैट अगर किसी कुत्ते को आप उसको वो लीश पहन के रखता है, मतलब गले में जो पहनता है दैट इज अ लीश. यू आर रिलीजिंग अ डॉग फ्रॉम दैट इज यू आर अनलीशिंग अ डॉग. राइट. सिर्फ डॉग के लिए ही ये एप्लीकेबल नहीं है, ये बहुत सी जगह पे एप्लीकेबल है. लाइक सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं सेट फ्री या फिर रिलीज. एंटोनिम्स हो सकता है रिस्ट्रेन. सेंटेंस में कैसे यूज करें? फ्रीडम इज अबाउट व्हाट यू कैन अनलीश. तो क्या अनलीश आप कर सकते हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्रीडम. राइट. So our next idiomatic expression is pull strings. Pull strings. What is the meaning of this pull strings? It is used in a context when someone takes the help of influential people in order to obtain an advantage. मतलब आपके दोस्त कुछ है, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, मे बी वो लोग पॉलिटिक्स के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ रिलेटेड है, जो पावर में है, जो पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ रिलेटेड है, उसके अच्छे पोजीशन में है. सो दे आर पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पीपल, राइट. I mean, you are taking the help of those influential people to get some advantage. अपना कुछ advantage के लिए आप उनसे help ले रहे हो powerful लोगों से. That is when you are pulling strings. Right? Let us see how to use it in a sentence. Sheena finally found a job she wanted. Her father just pulled a few strings. तो शीना को जो जॉब चाहिए था वो मिल चुका है. क्यों, कैसे मिला? बिकॉज हर फादर जस्ट पुल्ड अ फ्यू स्ट्रिंग्स, मतलब उसके पापा ने कुछ ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ उनका परिचित है वो, तो उनका हेल्प उन्होंने लिया. दैट इज व्हेन हर फादर पुल्ड द स्ट्रिंग्स. Our next vocabulary word is encumbrance. Encumbrance is a noun जिसका मीनिंग होता है भार, और यू कैन से एन इम्पेडिमेंट और बर्डन, मतलब बोझा बेसिकली. दैट मीन्स तुम मेरे माथे पे ऊपर बोझा हो, सर पे ऊपर बोझा हो. दैट इज कॉल्ड यू आर अ भार, यू आर अ बर्डन फॉर मी. Synonyms can be hindrance, obstruction. Antonyms can be help, asset. Right. How to use it in a sentence? They have no benches or chairs, and thus they get rid of the encumbrance of much furniture. तो उनके पास बेंच भी नहीं है, चेयर भी नहीं है, तो उनके सर पे ये बोझा नहीं है, ये बर्डन नहीं है, बहुत सारा फर्नीचर कैसे टैकल करे, ये इनकम्बरेंस उनके पास नहीं है. राइट. आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड इज alienated. Now, what do you mean by alienated? Alienated means adjective. It's an adjective जिसका मीनिंग हिंदी में लिखा हुआ है अलग थलग, और यू कैन से specifically alienated means to make an individual feel unwanted or removed from a group or relationship. Maybe you are in a group, you have a group of friends, you are four friends, right? But unfortunately or suddenly you are behaving very badly with one friend, right? With one friend, and you make a group again of three friends. You leave that friend from that, you throw out that friend from that group. That is when the friend feel alienated. That means he is thrown out of that group, he is now feeling unwanted or removed from that group, right? उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे ग्रुप से निकाल दिया गया है, मुझसे कोई बात नहीं करेगा, मैं अकेला हो चुका हूँ. दैट इज व्हेन ही फील एलिनेटेड. Synonyms can be synonyms can be disaffect, disgruntle. Antonyms can be endear, ingratiate. How to use it in a sentence? The restaurant owner hesitates to change his menu because he does not want to alienate his regular customers. What is the meaning of this? The restaurant owner, that means the owner of the restaurant, hesitates to change his menu. तो रेस्टोरेंट ओनर अपना मेन्यू चेंज करने के लिए हेजिटेट कर रहा है क्योंकि वो अपने पुराने जो कस्टमर्स हैं उनको एलियनेट नहीं करना चाहता, मतलब उनको ऐसा फील नहीं दिलाना चाहता कि रेस्टोरेंट चेंज हो चुका है, रेस्टोरेंट का मेन्यू चेंज हो चुका है, अब यहाँ पे हम लोग और खाने नहीं आएंगे, कहीं और पे जाएंगे, राइट. तो जो पुराने कस्टमर्स है वो उनको एलियनेट नहीं करना चाहता. राइट. आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड इज अनहिंडर्ड. अनहिंडर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है निर्बाध, और यू कैन से नॉट हिंडर्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड. Right, so you are not hindered or obstructed. Synonyms can be straight or non-stop. Antonyms can be incomplete, indirect. How to use it in a sentence? He was able to pass unhindered through several military checkpoints.
तो वो बहुत से मिलिट्री चेक पॉइंट्स से निकला है अनहिंडर्ड, मतलब उसको किसी ने रोका नहीं, राइट? दैट इज कॉल्ड अनहिंडर्ड, दैट मीन्स अनऑब्स्ट्रक्टेड, राइट? So this is the last vocabulary word for today. It means castigated. It is a verb जिसका मीनिंग हिंदी में होता है आलोचना करना. Or you can say to criticize someone or something severely. It's not आलोचना, right? Castigated means you are criticizing somebody. मतलब किसी के बारे में आप बहुत खराब खराब बातें बोल रहे हो. That is when you are criticizing somebody very badly. Synonyms can be reprimand, rebuke. Antonyms can be praise, comment, right? Now, how to use it in a sentence? My mother was a cruel woman who never missed an opportunity to castigate my father. So, my mother was a cruel woman. That means my mother was a very bad woman. वो एक भी चांस मिस नहीं करती थी मेरे फादर को कैस्टिगेट करने का. दैट मीन्स मेरे फादर को क्रिटिसाइज करने का, मतलब खराब बातें बोलने का. So, this is our last idiomatic expression for today. What is it? Yes, it means a bit beyond one's ken. What does it mean? A bit beyond one's ken. It is used in a context when something is beyond one's ability to understand the matter. The matter, it should be matter, the matter or task. That means it is beyond your understanding. You cannot understand this. Your ability is not this much that you will understand this matter, right? So it is beyond your ability, you cannot understand this, it is out of your level. So how to use it in a sentence? The stuff they are teaching in this advanced mathematics class is a bit beyond my ken. तो ये जो एडवांस्ड मैथमेटिक्स क्लास हो रहा है, ये मेरे समझ से थोड़ा बाहर है. इट इज़ बियॉन्ड माई किन. दैट मीन्स मेरे लेवल से ये बहुत ऊंचा है, ये हायर लेवल का मैथ सिखा रहे हैं, तो मुझे समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. So with this kind of a situation, you can use this idiomatic expression a bit beyond one's ken. Right, so with this, we have come to the end of our session. This was all about your top 10 vocabulary words for today and 3 idiomatic expression. I hope you liked the session. If you liked the session, do click on the like icon and share it with your friends. And yes, comment in our videos. If you are new to our channel, you can you should subscribe to our channel if you want this kind of educational videos regularly, if you want to get more knowledge about vocabularies, about idiomatic expressions, right? So if you want to crack government examinations, you should subscribe our channel and click on the bell icon so that you get all the recent updates. So see you next day. Till then, take care. Goodbye.